Thank you, ma'am. So let's begin with the childhood asthma and the interaction between different kind of hormones which play a role in this kind of disease. So if we ask about childhood asthma, so what do we understand by the term asthma and what actually causes it? Yeah, thank you for that question. Before that, I would like to thank the organizers of this KK Med Talks because I have been rave of Dr. KK Agrawal sir, and I think we are actually I am also the joint secretary of IMA Trivandrum. So we are paying rich tribute to sir through this informative public awareness initiative. Coming to your question, ma'am. So the basic pathophysiology or the basic mechanism of childhood asthma is inflammation. So acute severe asthma is there, chronic asthma is there, and there are also exacerbations and also a emergency called status asthmaticus. So these are all medical terms. To make it simple, asthma is a heterogeneous disease. That means it is not a very homogeneous structure. That is not same in everybody. It is characterized by some symptoms which are easy to understand, like a cough, a dry irritating cough, a wheeze, which is like rattles, or we can see that the purr of a cat. Similarly, a wheeze-like sound is coming, and also shortness of breath and tightness of chest. So these vary across time and intensity. There are some triggers factors. There are some seasonal affections, and basically the airways get narrowed. So basically, people all know about COVID. It's an inflammatory condition. Similarly, it's this asthma is also characterized by a chronic inflammation and hyper responsiveness because somebody responds quickly, but that is also bad. So the airways which respond very hyper, that causes inflammation and limits the flow towards the airway. So to make it simple, it is actually reversible obstruction, it is recurrent obstruction, and it varies across time and place and within persons also. So, to a very simple definition, it is a chronic disease. Sometimes it can flare up acutely. It is heterogeneous in nature and it is characterized by narrowing of the airways. जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर के एम प्रसन्ना कुमार, गुड इवनिंग टू यू ऑल्सो। नाइट बोट के नाम से किसी ने लॉगिन किया हुआ है, आई डोंट नो देयर रियल नेम। Dr. K.M. Prasanna Kumar, looks like you are, they're talking to each other actually. Mr. Kaushik Chakrabarti, very warm welcome to our show. You're listening carefully to our show. Very happy to know this. स्वप्ना जी, आपको भी गुड इवनिंग। तो डॉक्टर शेनॉय हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। हम बात कर रहे हैं चाइल्डहुड एस्मा और हार्मोन्स के बारे में। डॉक्टर मोहन हमें बताना चाह रहे हैं कि एस्मा जो होता है बच्चों में, ये एक एपिसोडिक कंडीशन होती है। इसको हेटेरोजेनस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि डिफरेंट तरीके के जो फैक्टर्स हैं इस पे एक्ट करते हैं, और ये जब प्रेजेंट करती है तो एक कंसिस्टेंसी के साथ प्रेजेंट नहीं करती। एक जैसे सिम्पटम्स हर समय नहीं रहते, बल्कि ये चेंज होते हैं सीजन के साथ, और दिन का जो टाइम है उसके साथ भी वेरी करता है। तो एपिसोडिक कंडीशन जो होती है यूजुअली ये नाइट टाइम या अर्ली मॉर्निंग में होती है, जिसमें कि खांसी का आना, जो ड्राई कॉफ होती है, आपके चेस्ट में टाइटनेस फील होना, या सांस फूलना, या सीटी जैसी आवाज आना सांस से, जिसको हम वीजिंग कहते हैं, वो बहुत ही कॉमन सिम्टम्स होते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों में ऐसे सिम्पटम्स हमें कई बार पता नहीं लगते हैं। तो बच्चों में जो कॉमन सिम्पटम्स होते हैं बीमारी के, वो कोई भी बीमारी हो सकती है, उसमें वो खाना-पीना सबसे पहले खाना-पीना बंद कर देते हैं, जिसमें वो मिल्क जो है वो नहीं ले पाते, और कई बार उनको रिगर्जिटेशन होता है, और हम देखते हैं कि उसमें बलगम काफ़ी ज़्यादा जो है रिगर्जिटेट होके मिल्क में मिक्स होके बाहर आता है। और बच्चों में जो खतरनाक साइन हो सकता है ज़्यादा छोटे बच्चों में, उनके होंठ नीले पड़ना, क्योंकि उनकी जो साँस की नली है, जैसे डॉक्टर मोहन बता रहे हैं, उनकी साँस की नली जो है वो सिकुड़ जाती है। यही मैकेनिज़्म होता है अस्थमा का, जिससे आपकी साँस की नली जो है अपने आप ही सिकुड़ जाती है, और अपने आप ही कई बार ये बीच में ठीक होती है। लेकिन जो इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होती है, क्योंकि ये क्रोनिक कंडीशन है, वो इन्फ्लेमेशन काफ़ी देर तक ठहरती है, जिसको ट्रीट करना जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये तो हमने जाना डॉक्टर मोहन कि एस्मा होता क्या है, और थोड़ा बहुत हमने जाना कि उसकी पैथोफिज़ियोलॉजी क्या है।
Now, coming on to the triggers of asthma in children. So, what could be the triggers of an asthma attack in case of children? So the trigger means something which causes, just like a gun होता है उसको पकड़ के नीचे बैक में pull करते हैं. Just like that, when a child goes to play, even exertion can cause the trigger. So exertional asthma is also known. Then emotional factors. Some people get emotional. That also can cause. Then another is environmental factors. Environment में होता है प्रदूषण होता है. We have got crackers which are bursting. There are all pollutions which can irritate the airways. So there are many trigger factors. Then you have got the animal. Sometimes the cat dog उसके हाथ में दे तो उसमें से people can get some dander. All these chemicals can be exposed to them. Fur can be there. Then another factor is even the smell, the perfume also somebody gets triggered by that. So there are variable factors. Some people get allergic to food, that can also trigger a variant of asthma. So बहुत ज़्यादा factors है. So family history भी important होता है. So if I have a family member with an asthma, there is a risk of developing a chance of an asthmatic attack. So to identify the trigger factor, it takes lot of time. And basically बच्चों में जो होता है ना, so children like to play a lot. So maybe the trigger factor can itself be exertional thing. But what I am finding now, Dr. Vinny, is that a lot of people report that there are some other triggers which are not known previously. So I think we have to investigate them thoroughly. And sometimes nocturnal asthma also comes. In the night, the child can wake up with asthma. So there are many things which can trigger. So recurrent cough, recurrent wheeze, nighttime asthma, those things we should all ask history. जैसे कि बेड में होता है, without changing the bed, some bed sheet, that can also cause a trigger factor. So inside the house, outside the house, or anywhere which the child goes out, or even the parents bring some items, that can also cause trigger. But डरने की बात नहीं है. If you have an expert pulmonologist like Dr. Vinny, or a person who can guide you like a pediatrician, मैं तो अभी pediatrics से थोड़ा अलग होता हूँ, but still, because a topic like this is having public health importance, some people who get obese, वजन ज्यादा होता है, उनमें भी ज्यादा ट्रिगर फैक्टर्स बढ़ती है क्योंकि इम्यूनिटी में थोड़ा कम होता है.